Hello, my dear children. A very warm welcome to everyone in this today's session. Today we come back with our next poetry of Rhapsody. Okay, so today we're going to see our next poetry number second of ISC class 11th and 12th Rhapsody. That is why I like the hospital. All right, why I like the hospital is a very interesting and a very cool it's a poem, okay, which is written by Tony Hoagland. Okay, Tony Hoagland has told us, he has tell us tells us the significance of hospital. Hospital isn't the place where all the time you see the cries and the pain, but it is the hospital where you will have like the some separate time with from the country, okay, from the people. You feel some separate time from them. Okay, so this is the time of contemporary world. What do you mean by contemporary world? Contemporary world means when the these wars and when these conflicts, when these revolts used to happen. Okay, so this poem takes place during the contemporary world, and during that contemporary world, okay, hospital was the place where a man can he can ooze out his all the feelings, because at that time there was during the contemporary world it just said that don't whosoever will cry first, okay, he will be called as the weakest person. मतलब जो सबसे पहले रोएगा वो सबसे ज़्यादा वीक पर्सन है. ड्यूरिंग द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड ये सब उसकी उनकी थिंकिंग थी. तो इसकी वजह से they pretend, the people pretend to be very strong, but they are not. Okay, they're not as strong as they seem to be. Okay, because during contemporary world it is the perception that whosoever, whether a man or a female, whosoever will sob first, whosoever will cry first, he or she will be the weakest person. So at that era, during the contemporary era, okay, during the contemporary era, hospital was a place where a man or a woman can ooze out all its pathos, all its feelings. Okay, so hospital was that place where a man can he can ooze out his all the feelings. He can release his all the pains and sufferings. Okay, so let's see why Tony Hoagland liked the hospital. Okay, so let's see who is Tony Hoagland, because you are reading about this person for the very first time. So Tony Hoagland, his full name was Anthony D. Hoagland, who was a renowned modern American poet. His father was an army doctor. So Hoagland grew up on various military bases in Hawaii, Alabama, Ethiopia, and Texas. He has authored several poetry collections like Sweet Dreams, Donkey Gospel, winner of the James Loughlin Award, What Narcissism Means to Me, and etc. Okay, so he has written these poetries. Among these, this is What Narcissism Means to Me. This is a very interesting short poetry. If you get time, please read this poem as well. This is very interesting. What Narcissism Means to Me, okay, by Tony Hoagland. So let's start discussing about why I like the hospital. So as I told you, this is the poem of contemporary world. Contemporary world means when these revolts, when these wars, when these brawls used to happen. Okay, when these wars used to happen. Okay, so during that time, okay, everyone pretend to be very strong, because that was the era of wars. So during the war, we should pretend, we should look like a very strong, a very valiant person. Okay, so during that war time, everyone looks like they seem to be very strong, though they were not very strong, but they seem to be very strong. Okay, so during that era, during that time,
hospital. This hospital was a place where a man can release all its pain, all its sufferings, and all its like suffocation. Okay, he can release all the pains, sufferings, and suffocation from his or her heart. Okay, so that's why Tony Hoagland says that why he liked the hospital, because in the hospital man can ooze out all its feeling. This is the place where a man can weep, a man can cry, a man can sob, and this is the place where a man can like he can release as many pain as he want. Okay, क्योंकि see, if you cry, yeah, suppose you are having a lot of pain in your heart. Okay, you are having a lot of pain in your heart, and once you will cry, all the pain will ooze out in a form of a eye drops, or in the form of these droplets of the ice. Okay, so that's why this hospital is a place where men can release all its pain, okay, all its sufferings, because during that contemporary world, okay, there people were not having any like independence. Okay, every now and then they used the revolt, the war used to happen every now and every now and then they used to pretend to be very strong. Okay, so there were no place where they can release their pain, their sufferings to anyone. So they seen one place, that is hospital, where he can release all its pain. Are you okay? So that's why Tony Hoagland says why he liked the hospital, because hospital was a place where men can release and he can ooze out all its pain, all its sufferings. Okay. So this poem, why I like the hospital, this is satirical in nature. Okay, this is satirical in nature. What is satirical? Means the poem satires that people are very strong. Okay, means the people, they seem to be very strong as they are not too much strong. Okay, means the people seem to be very strong but they are not that so strong. Okay, so that's why people that's why this is satire in nature. This poem is satire in nature कि जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या दिखाते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत हैं, पर वो उतने होते नहीं हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ पेन इन देयर हार्ट, इन देयर माइंड. Okay, they are having a lot of sufferings in their mind, in their heart. Okay, but during that contemporary world, it was the perception, it was perception that just whosoever will cry first, he or she will be the weakest person. जो सबसे पहले रोएगा वो सबसे ज़्यादा weakest person है. तो ये perception के कारण कोई भी पहले रोता नहीं था. सब अपने दर्द को कहाँ रखते थे? अपने हार्ट में, अपने माइंड में. ओके, अपने अंदर ही रखते थे. तो कहते हैं कि इसीलिए मुझे हॉस्पिटल बहुत पसंद है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो जो दर्द होता है जो सब लोगों के अंदर होता है, वो उस जगह पे वो लोग निकाल सकते हैं उस दर्द को. ठीक है, इससे वो लोग वीक भी नहीं कहलाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग भी नहीं कहलाएंगे, और अपने दर्द को भी वो बाहर निकाल सकते हैं. दैट्स वाई टोनी होगलैंड हैज सेड दैट ही लव्ड द हॉस्पिटल. ओके, उन्हें हॉस्पिटल इसलिए अच्छा लगता है जिससे कि वो मतलब एक हॉस्पिटल ही ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपने सारे दर्द को बयां कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव सीन अबाउट टोनी होगलैंड. ही इज टोनी होगलैंड. हिज फुल नेम वाज एंटोनी दे होगलैंड. Okay, let's discuss about the line by line explanation of the story. As I told you, let me tell you this as well. This poem is satire in nature. Okay, this poem is satirical in nature. Okay, this poem is satirical in nature. What do you mean by satirical? We have read this word. This is not a new word for us. We have read in the story writing, I think. Okay, so satirical means to make the fun of human feelings. Okay, to make the fun of human feelings is known as satirical. Okay, so here like Tony Hoagland, he has not made the fun of human feelings, but he has told what was the pathetic condition of during that eras of the patients.
Okay, that they cannot cry first, they cannot weep first. Okay, otherwise they will be called as the weakest person. So that's why this poem is satirical in nature. This whole poem is satirical in nature. Okay, so I hope you are clear with this concept as well. Let's move first further with our story. Okay, so our first stanza says here, Tony Hoagland says, like he has said, why I like the hospital. So he answered, I like the hospital because, now here, he liked the hospital because it is all right to be in a bad mood there, slouching along through the underground garage, riding wordlessly on the elevator with the other customers staring at the closed beam doors like a prison wall. Here Tony Hoagland say very satirically, okay, one more thing, this why I like the hospital, this like this is this is an irony. Okay, this statement is irony. Okay, because why this is irony? Because hospital isn't a place for any recreation and for fun. Okay, isn't a place for for liking. Okay, whenever we used to go hospital, what are our perception? We used to frighten with the equipments on the hospital. We used to frighten to the blood over there. Okay, so means overall hospital is a place where we used to, means most often we used to frighten. Okay, but here Tony Hoagland has said that he loved the hospital. That's why it is irony. This statement is ironical in nature. Okay, make sure you remember this thing as well, because hospital isn't a place for recreation and for fun. Then also Tony Hoagland, he has said that he loved the hospital. Okay, so this is an irony. Okay, I hope you are clear. Now let's move to the poem. Because it is all right to be in a bad mood there, slouching along through the underground garage, riding wordlessly on the elevator with other customers, staring at the closed beam doors like a prison wall. Okay, here Tony Hoagland says, I like the hospital. मुझे hospital पसंद है क्योंकि it is okay if you are in a bad mood there. मतलब अगर आप एक हॉस्पिटल में, अगर आप बैड मूड में हो, अगर आपका मूड सही नहीं है हॉस्पिटल में, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपका मूड क्यों खराब है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड. मतलब कोई बात नहीं अगर आपका मूड सही नहीं है हॉस्पिटल में. ऑब्वियसली हॉस्पिटल में किसी का मूड सही नहीं रहता है, तो इसलिए कोई आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपका मूड क्यों नहीं सही है, क्योंकि सबको पता है. क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपका मूड ऑब्वियसली सही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी डैमेज्ड. ओके, सो दैट्स व्हाई Tony Hoagland says that it's okay if you are in a bad mood there. Okay, it's okay that your mood is not okay, it is not good, because no one will inquire to you, no one will answer, like question to you why you are sad, because they know that if you are in a hospital you will be sad. Okay, next, slouching along through the underground garage. Slouching का मतलब होता है मूविंग स्लोली, है ना, बहुत हल्के हल्के ढलना. ओके, तो जो पेशेंट्स हैं वो बहुत हल्के हल्के अंडरग्राउंड गैरेज से जा रहे थे. अंडरग्राउंड गैरेज मीन्स उधर एक गैरेज थी अंडरग्राउंड, वहाँ से वो लोग स्लोली जा रहे थे. ओके, riding wordlessly on the elevator with the other customers without uttering a single word. They were going with the other customers. Customers का मतलब है यहाँ पे पेशेंट से. ओके, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनसे मतलब है. ओके, तो जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड गैरेज वहाँ पे बनी हुई थी, वहाँ से और पेशेंट्स के साथ वो लोग भी जा रहे थे. मतलब बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ नीचे जा रहे थे अंडरग्राउंड गैरेज में. स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड बीइंग डोर लाइक अ प्रिजन वॉल. और वो उस जो अंडरग्राउंड गैरेज है वहाँ पे वो देख रहे थे. इट वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिजन वॉल. ओके, इट वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिजन. वो किसी जेल से कम नहीं लग रहा था, बिकॉज इट वॉज लाइक क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द वे.
ओके, हर जगह से वो क्लोज था, दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग लाइक अ क्लोज, दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग लाइक अ प्रिजन। ओके, वो किसकी तरह लग रहा था? प्रिजन की तरह लग रहा था। बीइंग स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड बीइंग डोर, बीइंग का मतलब होता है डल। ओके, सो वो डल डोर से, ओके, बहुत ही डार्क डोर से वो लोग जा रहे थे, जो कि उन्हें कैसा लग रहा था? लाइक अ प्रिजन। किसकी तरह लग रहा था? जैसे कि हम किसी जेल में आ गए हो। ओके, आई होप दिस stanza is clear to you. Like tell you again so that you do not get confused. पोइट कहते हैं मुझे हॉस्पिटल इसलिए पसंद है बिकॉज अगर आप उधर बैड मूड में हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप बैड मूड में क्यों हैं, आपका मूड खराब क्यों है, क्योंकि उन्हें पता होगा दैट इफ़ यू आर इन अ हॉस्पिटल योर मूड विल बी ऑटोमेटिकली इट विल बी बैड, ये बुरा ही होगा। ओके, और मैंने देखा कि कुछ मतलब जो डॉक्टर्स हैं, ओके, जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ पेशेंट्स को, ओके, दे वर like passing those some of the patients from the underground garage. Slouching means moving slowly, मतलब हल्के हल्के वो अंडरग्राउंड गैरेज से वो नीचे की तरफ जा रहे थे। ओके, then they were not uttering a single word, without utter a single word they were going through the elevator, they were going through the lift. elevator का मतलब होता है लिफ्ट। ओके, with the other customers, और लोग और पेशेंट्स के साथ, मतलब उनके साथ कोई और पेशेंट्स भी थे। ओके, ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल में सिर्फ एक दो पेशेंट्स ही होंगे, दे वर मैनी पेशेंट्स एंड दे ऑल वर गोइंग थ्रू द लिफ्ट, थ्रू द एलिवेटर, एंड दे वर जस्ट सीइंग ऑन द क्लोज्ड बीइंग डोर, बीइंग मीन्स डल। ओके, दे वर सीइंग, वो देख रहे थे एक डल डोर पर। ओके, जो कि उन्हें कैसा लग रहा था? प्रिजन की तरह लग रहा था। क्यों प्रिजन की तरह लग रहा था? क्योंकि सेम जैसा प्रिजन में होता है, प्रिजन में कैदियों को कोई आज़ादी नहीं होती है, सेम हॉस्पिटल भी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक पेशेंट को कोई आज़ादी नहीं होती है। वो बिना डॉक्टर से कहे उठ भी नहीं सकता, बिना डॉक्टर से कहे कुछ कहीं चल भी नहीं सकता, उसे हर काम करने से पहले डॉक्टर से एक बार एडवाइस लेनी होगी, है ना? दैट्स वाई दिस हॉस्पिटल हैज़ कंपेयर्ड टू द प्रिजन, because same as prison do not have any independence, same hospital also not have any independence. आप डॉक्टर की परमिशन से कहीं बाहर जा भी नहीं सकते, आप डॉक्टर की परमिशन से किसी दूसरे रूम में रुक भी नहीं सकते। यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ डॉक्टर बिफोर डूइंग एनी वर्क। सो दिस शोज the restrictions, okay, that shows the restrictions, okay, on the pupil. So I hope this stanza is clear to you. Let's move to the next stanza. Okay, I like the hospital for the way it grants permission for pathos, the mother with cancer deciding how to tell her kids, the bald girl gazing downward at the shunt installed above her missing breast. And I love the hospital, मुझे हॉस्पिटल पसंद है because for the way it grants permission for pathos, because there's no restrictions. Okay, हमें परमिशन नहीं लेनी होती है, okay, हमें परमिशन नहीं लेनी होती है to express our sorrow. pathos का मतलब होता है sorrow. okay, तो हमें मतलब अपनी फीलिंग्स, जो सॉरोफुल फीलिंग्स होती हैं, उन्हें दिखाने के लिए हमें कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। अगर हमें बुरा लग रहा है देन वी कैन वीप, वी कैन क्राई, अगर हमें अच्छा लग रहा है देन वी कैन लाफ। ओके, तो हमें वहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं लेनी होती है एज द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जैसे कि हमें वहाँ पे, जैसे कि हमें हॉस्पिटल से बाहर मतलब कोई काम करने से पहले परमिशन लेनी होती है। ओके, दैट्स वाई आई लव द हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को खुलेआम बयां कर सकते हैं। ठीक है, द मदर विथ कैंसर डिसाइडिंग हाउ टू टेल हर किड्स, द बोल्ड गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड एट द शंट, एंड द मदर, और जो मदर हैं, जो मदर्स होती हैं, दे वर वेरी टेंस्ड, दे आर वेरी टेंस्ड, वो बहुत परेशान हैं, दे आर बॉदरिंग दैट हाउ टू टेल देयर किड दैट they are going to die. Okay, how to tell their kids that they are having the like long terminal diseases like cancers. Okay, तो जो मदर है वो
she cannot decide that how to tell her kid that she is having a long terminal disease, that is cancer. Okay, and the bold girl gazing downward at the shunt, and the bold girl means a girl without hair. Okay, ganja. Okay, तो जो bold girl है, she's looking, gazing means looking continuously, she's looking continuously downward, वो नीचे की तरफ देखती है at the shunt means shunt होता है एक tube, it is a tube which passes the fluid like of blood, or which passes the blood. Okay, तो जो वो बॉल्ड गर्ल है, शी इज़ ऑल्सो हैविंग द कैंसर. ओके, सो उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चढ़ाया जा रहा है, दैट्स वाई शी इज़ लुकिंग डाउनवर्ड एट द शंट, वो नीचे की तरफ देखती है शंट की तरफ. ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये जो दो लोग हैं, ये जो दो पीपल हैं, मदर, this mother and this bald girl, they both facing the long terminal disease, that is cancer. Okay, this mother having the breast cancer and this is having the blood cancer. Okay, so they both cannot decide. Okay, they both know that that is certain, one day they have to go from this world. Okay, that's why this mother is very tensed that how to tell her kid, how to tell her child that she is not going to like fine now, she is going to die now. Okay, because she is facing the long terminal disease, the very fatal disease, that is cancer. Okay, and this bald girl, this is also hopeless, seeing down, see, gazing downward का मतलब है नीचे की तरफ देखना, मीन्स वो बिल्कुल होपलेस हो चुकी है, अब उसमें कोई भी होप बाकी नहीं है, वो उसे पता है कि उसकी मौत अब सर्टेन है, उसकी मौत एक न एक दिन होने ही वाली है, अब वो 2-3 दिन की ही मेहमान है बस. ओके, तो ये सब क्या शो करती हैं? ये जो दो लाइन है ये शो करती हैं हेल्प, होपलेसनेस. ये दोनों लाइन क्या शो करती हैं? होपलेसनेस, कि जो दोनों लेडीज़ हैं वो कितनी होपलेसनेस हैं, बिकॉज दे आर सर्टेन दैट देयर डेथ इज गोइंग टू हैपन. ओके, and installed above her missing breast, and she is installed above means, and she is looking at her like missing breast. Okay, जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, शी इज़ बॉदरिंग दैट वो अपने बच्चे को कैसे बताए, शी इज़ like not going to okay now, she is not going to fine now, because she is like she is dealing with cancer, which is a long terminal disease and which is not having any cure as well. Okay, so that's why she is looking at her missing breast, she was not having breast. Okay, so that's why she is very tense that how to tell her kid that she is having the cancer and she is not going to okay now. ओके, तो ये दोनों शो करते हैं होपलेसनेस को. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव. नेक्स्ट सेंटेंस इज द क्रोन इन हर पजामास वॉकिंग विद एन आइवी पोल. आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक्स ऑन द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट, or the fresh flowers tossed into the basket, into the waste basket. Now here the crone means the old women. Okay, the old women, और जो old woman है in her pajamas, who is wearing the pajamas, okay, जिसने pajamas पहने हुआ है, walking with an ivy pole, walking with an intraventral pole. Ivy means intraventral pole. Okay, ivy refers to intravenous pole. Okay, intravenous pole is a pole where the tips, okay, जो टिप्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं ग्लूकोज की और ये सब उसमें टंगी होती हैं. यू हैव सीन दैट स्टैंड, उस स्टैंड को हम कहते हैं इंट्रावेंट्रल पोल. ओके, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक. पोइट क्या कहते हैं कि आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक और द एयर कंडीशनिंग सेट ऑल हाई नाइट. और जो एयर कंडीशनर, जो एसीज हैं, वो पूरी रात जो उसका टेम्परेचर लो रहता है, आई डोंट लाइक दैट कंडीशन.
okay, because the AC's temperature all the time it like like it stays at low, okay, it stays at a very low temperature, the AC's. This show what, this show the cold. See, इसका एक और मीनिंग है, ऑल द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट, और जो एसीज हैं वो पूरी रात बिल्कुल उनका टेम्परेचर लो रहता है, जिससे कि उनका एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, चिल्ड रहता है, ओके। ये जो लाइक लाइन है ये शो करती है लाइक सिंपथीलेस, कि जो हॉस्पिटल है दैट इज सिंपथीलेस, इट इज़ नॉट हैविंग एनी एम्पैथी, इट इज़ नॉट हैविंग एनी सिंपैथी, ओके, इट इज सिंपथीलेस, ओके। तो दैट्स वाई द ACs are AC, the temperature of the ACs are very low because it shows the like hopelessness. ये मतलब it is the sign of lack of warmth, okay. This line, all the air conditioning set on high all night, this is the sign of sympathyless and lack of warmth in the heart of the humans, okay, because they were not having the sympathy, okay. And that's why the air conditioning, the ACs are they are having the very low temperature all night. Or the fresh flowers tossed into the waste basket, और जो fresh flowers हैं that is tossed means that is thrown, okay. tossed का मतलब होता है that is thrown into the waste basket means जो litter bins होते हैं, जो dustbins होते हैं, okay, उनमें जो ये फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, ये फेंक दिए गए हैं। क्यों फेंक दिए गए हैं? बिकॉज दिस फ्रेश फ्लावर इज द लाइक इट इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। फ्लावर्स किसके सिंबल्स होते हैं? इट इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ द सिंबल ऑफ लाइक joyfulness, okay. A fresh the flower shows the fresh environment, but the environment of a hospital is very dull, it's very like conjuncted, okay, it is very concentrated. That's why these flowers are thrown into the litter bin, into the dustbin, and that's why this shows the lack of sympathy and lack of pity in humans, okay. These lines are very important, okay. See, this whole line this shows the lack of warmth in the humans, okay. Lack of warmth in the human, and this whole line, this shows the lack of friendshipness, and lack of happiness, and lack of joyful mood, okay. These both lines are very important. The first symbolizes the lack of warmth, and next line symbolizes the lack of friendshipness, lack of like humanness, and lack of sympathy, okay. Now this can be asked in your question, make sure you remember this thing, okay. Next is Pach. I like the way some people on their plastic chairs break out a notebook and invent a complex scoring system to tally up their days on earth. But I like the hospital. मुझे हॉस्पिटल पसंद है बिकॉज वहाँ पे जो लोग हैं, ओके, वहाँ पे जो लोग हैं प्लास्टिक चेयर जो व्हील चेयर होती है उस पर बैठे हुए, दे ब्रेक आउट मीन्स दे राइट आउट, ओके. ब्रेक आउट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. ब्रेक आउट का मतलब होता है where it is. breakout का मतलब होता है hold, okay. hold means they are holding a notebook, वो एक नोटबुक को पकड़े हुए हैं, and they are playing a game named complex scoring system. This is the name of the game which they were playing in the hospital, okay. complex scoring system is a game. तो उन लोगों ने एक गेम को इन्वेंट किया है, that is complex scoring system,
to tally up their days on earth, and they are just like calculating their days. Tally up means they were calculating their days on earth, means how much days they are left on the earth. Okay, means how much time they are having on this earth. So this is the game complex scoring system which they have like the patients in the hospital they have invented. Okay, they have discovered it, and they are just writing that how much days they are left on this earth, means कब उनकी मौत होने वाली है, कब वो इस अर्थ से जाएंगे, उन्होंने सब लिख रखा है इस कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम में. ओके, नाउ हाउ दे प्ले द गेम, लेट्स सी कैसे गेम को खेलते हैं. द कॉलम ऑन द लेफ्ट दिस इज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, फेसिंग द कॉलम ऑन द राइट दैट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट. मीन्स उन्होंने एक सी इस तरीके का, जस्ट वेट, इस तरीके का एक लाइक कॉलम बना दिया है, इस तरीके का पेपर पे एक कॉलम बनाया है. ओके ऐसे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे खेलना है बोलो. तो उन्होंने इस पे तो लिखा है ऑल द गुड डीड्स, उन्होंने इस पे क्या लिखे हैं, ऑल द गुड डीड्स विच दे हैव डन, जितने भी अच्छे कर्म उन्होंने किए. और इस पे उन्होंने लिखा है ऑल द बैड डीड्स विच दे हैव डन ड्यूरिंग देयर लाइफ, मतलब पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने उन्होंने बुरे कर्म किए, वो सब उन्होंने इस पेज पर लिख रखे हैं कि ये हाँ मेरे अच्छे कर्म थे और ये मेरे सारे बुरे कर्म थे, ये मेरे सारे बुरे डीड्स थे. ओके, सो दे हैव दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन that I acted like a fool means the bad deeds which I have done during my life, and times I acted like a saint, the good deeds, okay, which I am done during my life. Both the deeds they have written in the paper by making the column, by dividing the paper into into two parts. Okay, so they are playing this game. Name of this place complex scoring system, means they are scoring, they are giving the scores to their deeds. Okay, they are giving the scores by themselves to their deeds, what are they doing, what types of deeds they have done in their life. They are scoring, they are giving the scores. Suppose they have done, just take an example, a hypothetical condition. Okay, suppose they have done 10 good deeds in their life, okay, and 15 bad deeds in their life. So they are telling up, they are calculating कि मैंने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं और क्या क्या मैंने बुरे कर्म किए हैं. तो ये सब वो नोट कर रहे हैं अपनी डायरी पे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा says that I like the long prairie of the waiting and forced intimacy of the self with the self, each sick pupil standing in the middle of a field like a tree wondering what happened to the forest. Okay, now I like the long prairie of the ground means he is like a line, the long prairie of the ground. Prairie का मतलब होता है the ground. Sorry, what I'm saying. I like the long prairie of the waiting, that the forced intimacy of the self with the self means I like the long ground. Prairie का मतलब होता है I love the long ground of the waiting and forced intimacy of the self with self, and like and they were talking to their selves. Okay, they are talking to themselves, अपने आप से बातें करते हैं कि उन्होंने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, उन्होंने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं, उन्हें कैसे क्या करना है. ओके, तो नेक्स्ट, each sick pupil standing in the middle of a field like a tree wondering what happened to the forest. और हर एक they are just standing in the middle. Okay, means they're standing very lonely in the forest in the middle of their life, and they cannot see even a single tree. Means what is mean, let it tell you. See, each sick person standing in the middle of a field like the trees wondering what happened to the forest means वो ऐसे अकेले खड़े हैं जैसे कि कोई फॉरेस्ट में एक अकेला ट्री खड़ा होता है,
जैसे कि पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ एक ट्री खड़ा होता है, बाकी सब ट्री होते ही नहीं है। जैसे कि ट्री वॉन्डर करता है, जैसे कि ट्री बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि बाकी सब ट्रीज़ कहाँ चले गए। मीन्स क्या हो गया इस फॉरेस्ट को, क्योंकि एक ट्री ही फॉरेस्ट बनाता है। जब सारे ट्रीज़ कट जाएंगे, सारे ट्रीज़ नहीं होंगे, सिर्फ एक ट्री होगा, तो वो फॉरेस्ट होगा ही नहीं। तो इसलिए ट्री कहते हैं कि क्या हो गया इस फॉरेस्ट को। ओके, सारी फॉरेस्ट। ऐसे ही जो मैन है, ओके, जो मैन है वो मतलब सोचता है जब वो बीमार होता है तो उससे कोई भी मिलने नहीं आते हैं, वो बिल्कुल अकेले ही रहते हैं। ओके, इवन उनके जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ओके, वो तक उनसे मिलने नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेंस ऑफ डिसोरिएंशन का मीनिंग बताया गया है। सेंस ऑफ डिसोरिएंशन मीन्स द सेंस ऑफ like pittiness, okay, the sense of pittiness. So here they are saying that today the patients are saying today the patients are like this as a single tree standing in the forest. Means जो patients हैं वो ऐसे हैं आज जैसे कि पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ एक सिंगल ट्री ही खड़ा होता है। ओके, और वो ट्री बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि बाकी ट्रीज को क्या हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो एक पर्सन, एक पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, उससे मिलने कोई मतलब बहुत कम लोग ही आते हैं। ओके, जनरली उससे मिलने कोई नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्सन है वो अपनी एक लार्ज कम्युनिटी से, मतलब एक अपने लार्ज वर्ल्ड से कैसे अलग हो जाता है, हाउ ही डिस्पेयर फ्रॉम हिज लार्ज कम्युनिटी। ओके, जैसे कि अगर एक कोई भी अगर हॉस्पिटल में होता है दैट ही इज सेपरेट फ्रॉम द अदर लाइक अदर वर्ल्ड, वो दूसरे वर्ल्ड से सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल अलग, है ना। तो वो यहीं पे बताया गया है द सेपरेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द लार्ज कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, now let's move to the next stanza. And once I saw a man in a lime green dressing gown, okay, and housed over in a chair a man who was not yelling at the doctor or pretending to be strong or making a mumbled phone call to his wife. And he saw a man, poet कहता है, and once I saw a man, और मैंने एक आदमी को देखा, who is in a lime green dressing gown. Lime green is a color, okay, so who is wearing the lime green attires, okay, who was wearing the lime green attires, okay, and hunched over in a chair, and she was bent over. Hunched over mean bent, मतलब झुका हुआ था वो चेयर की तरफ, कैसा था, झुका हुआ था। A man who was not yelling at the doctors, and that man, he was not even yelling, he was not even shouting like on the doctors. Yelling means he was not shouting, he was not crying at the doctors or pretending to be strong, and he was like seemed to be strong, मतलब वो डॉक्टर को ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा strong है। okay, or making a mumbled phone call to his wife, and he even not talk very softly to his spouse, to his wife. Okay, he has not disclosed his secret that he is ill. मतलब जनरली अगर हम इल होते हैं तो हम आवाज़ कैसी निकालते हैं, बहुत हल्की आवाज़ होती है हमारी, है ना, बहुत इल जैसी आवाज़ होती है। ओके, तो जो वो मैन है वो ऐसी आवाज़ नहीं निकाला है, वो मतलब अपनी वाइफ को ये बताना नहीं चाहता है कि वो बीमार है। ही इज़ नॉट like talking as a ill person, he was pretending to be strong, he seemed to be very strong, and that's why he's calling, he's talking to his spouse very like normally. Okay, so let's move to the next one. And next is, but one sobbing without shame, pumping it all out from the bottom of the self, the overflowing bulge of helplessness and rage, a man no longer expecting to be saved. But a one person, he was crying without any shame. ओके, एक तो मतलब एक तो बिल्कुल रो नहीं रहा था, एक तो बहुत स्ट्रांग बन रहा था। एक इंसान तो बहुत स्ट्रांग दिखा रहा था अपने आप को कि ही इज़ वेरी स्ट्रांग, अपनी वाइफ से भी वो मैटर डिस्क्लोज नहीं करता है दैट ही इज़ लाइक ही इज़ इल। ओके, और दूसरा वो बिना शर्म से वो रो रहा था, ही वॉज क्राइंग विदाउट एनी शेम,
pumping it all out from the bottom of the self, and he was oozing out. Pumping it means it was oozes out, it was like oozes out all his emotions from her mind. Okay, वो अपने सारे इमोशंस को बाहर निकाल रहा था. The overflowing bulge of helplessness and rage, a man no longer expecting to be saved, means जो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा कचरा भर गया था. bulge बेसिकली शिप का बॉटम पार्ट होता है, जहाँ पे जितना भी लिटर होता है शिप का, जितने भी सपोज ऑयल स्पिल हो गया या कोई भी लिटर हो गया, वो सब वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है. ओके, बाइल्ज एक डस्टबिन होता है, एक लिटर बिन होता है इन द शिप. कहाँ पे? शिप में, जहाज में. पर यहाँ पे बाइल का मतलब है उसका जो माइंड है, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं उसके माइंड में, वो डिस्क्लोज नहीं करता है वो किसी के सामने. ओके, वो डिस्क्लोज कर देता है सबके सामने. ओके, ही ooze out all his emotions from his mind. ओके, a man no longer expecting to be saved, और उसे लग रहा था कि अब मेरी मौत आने ही वाली है. That's why he was crying very loudly. Okay, he is showing his disease, and he is telling everyone that he is going to die now. Okay, now, but if you looked, you could see that he was holding his own hand in sympathy, listening to every single word, and he was telling himself everything. पर अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उस इंसान ने अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फोल्ड कर रखा है. ओके, उसने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा है और अपने आप को ही इज कंसोलिंग हिमसेल्फ. ओके, वो अपने आप को ही दिलासा दे रहा है, अपने आप को ही कंसोल कर रहा है इन सिंपैथी. ओके, एंड अपने आप को ही वो समझा रहा है. ओके, अपने आप को ही समझा रहा है टू कीप काम डाउन. ओके, टू काम डाउन. वो अपने आप को ही कंसोल कर रहा है क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है, ना उसके फैमिली मेम्बर्स, ना कोई. वो एक हॉस्पिटल में सबसे अलग महसूस कर रहा है. दैट्स वाई ही इज़ कंसोलिंग हिमसेल्फ, दैट ही इज़ कंसोलिंग हिमसेल्फ अबाउट हिज डिजीज़. ओके, and with this we have come to the end. Listening to every single word, and he was telling himself everything, means वो अपने आप को ही दिलासा दे रहा है. ओके, अपने आप को ही समझा रहा है. जब उसे मतलब उसे ये समझ आ गया कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसे अकेले ही अपने मतलब हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा. ही हिमसेल्फ हैज़ टू फाइंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्राइसिस, ऑफ एवरी ट्रबल. जब उसे ये समझ आ गया तो वो अपने आप को ही साहस देता है, अपने आप को ही कंसोल्ड हिमसेल्फ एंड ही मेक हिमसेल्फ ब्रेव. ओके, अपने आप को ही वो अपने ही पाम को पकड़े हुए हैं, एंड ही इज़ प्रिटेंडिंग हिमसेल्फ टू बी लाइक वेरी ब्रेव पर्सन. So with this we come to an end of this story, this like poem as well. Why I like the hospital. I hope you love this poem, and if you love this, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. That's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. Bye guys.